Once again, I welcome you all. In this lecture, we will study about flip-flops. Okay, na? So, in the previous lecture, we have studied that what is flip-flop, and in this lecture, we will study about the types of flip-flop. That is SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, and T flip-flop. Okay. So, let us start one by one. Now I am going to revise one more time what is flip-flop. So we have seen that a flip-flop has how many? Two inputs. Okay na? Suppose this is a maximum two inputs. Not always it is two input. Okay na? Either one or two inputs. And there will be a clock attached with the flip-flop. This clock is of two types, positive as a triggered clock or negative as triggered clock. If the clock is like this, then it is called as positive as a triggered. If the clock has one bubbled, then it is called as negative as triggering. Okay na? So this is our clock, and we in flip-flop we have how many? Two outputs, that is Q and Q bar. Okay na? So this Q is called as normal output, this one is called as complemented output. Under normal condition, we know that Q and Q bar both are complement of each other. Okay. Now one more concept we have studied in flip-flop, that it is works on two stable state. It has two stable state. Okay ना? So one is set, और इसको हम कहते हैं वन स्टेट. In this state Q is 1, so Q bar will be 0 because it is complement. And the second one is reset, or you can say zero state, or you can say clear state. Okay na? In this case Q is equal to 0, so Q bar will be 1. Okay na? This is all about flip-flop, and flip-flop store only one bit data, only one bit binary data. Okay. This lecture we will study four types of flip-flop. Okay na? The first flip-flop will be SR flip-flop. Then we will move to JK flip-flop. Then we will study D flip-flop, and last one will be T flip-flop. Okay na? So first of all, we are going to study about SR flip-flop. SR flip-flop. This is our heading. Okay na? So we already know about SR latch. So in SR latch we have how many? Two क्रॉस कपल्ड नैंड और नॉर गेट. ओके ना? सो मैंने एक चीज़ बोला था कि जो लैच होता है और जो फ्लिप-फ्लॉप होता है, तो फ्लिप-फ्लॉप में वी हैव एन एडिशनल क्लॉक इनपुट. ओके ना? हमारे पास एक क्लॉक इनपुट होता है जो कि लैच में नहीं होता. तो वी विल जस्ट अटैच दैट क्लॉक इन द सर्किट. ओके. सो आवर SR flip-flop will be, suppose I am going to form this SR flip-flop using NAND gate. Okay, so it will be, this is our two cross coupled. Okay na? This is our two cross coupled NAND गेट. ओके ना? सो ये हमारा लैच हो गया SR लैच. इफ़ यू विल प्लेस S हियर, R हियर. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? SR लैच हो गया. बट इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस कपल्ड. वाई? बिकॉज सी हियर इट इज़ क्रॉस हियर. ओके ना? ये जो इसका इनपुट है वो इसके आउटपुट से, और जो फर्स्ट वाला है इसका इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्ट होता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस कपल्ड, बिकॉज इट फॉर्म्स क्रॉस हियर. ओके. नाउ this is our SR latch, but I want to convert it into flip-flop.
So I will take 1 which gate, NAND gate here, and the one input of this will be connected with S. Here we will connect with R, and the second input of both NAND gate will be connected with the clock. Okay na? So this is our output Q, this one is Q bar. So this is the structure of SR flip flop. Okay, so SR flip flop means SR latch means two cross coupled NAND gate होगा उसमें, and since we have flip flop not latch, तो ये clock we have to apply here. okay ना? So इस clock को अब देखो यहाँ पे मैंने why we have taken this NAND gate, we have taken this NAND gate so that we will get the same functional table that we have got SR latch. okay na? So I want that functional table SR latch using NOR gate. Okay, the first concept is our functional table, how it comes. So if you see here, so our functional table will be function table. So it will contain SR, our input, and here we have output. Now one more thing we have here, that will be clock. okay na? So at initial stage, when clock is not on condition, then whatever value you have at S and R, okay ना, next state में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं. नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? दैट प्रीवियस स्टेट, बिकॉज वी आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द क्लॉक. जब तक क्लॉक यहाँ ऑपरेट नहीं होगा तब तक यहाँ आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना? नाउ व्हेन आवर क्लॉक इज ऑन, देन these two input has how many combinations? 4 combinations. So we have these 4 combinations. Okay, so this is our 4 combination, and in all these cases our clock is on. This represent clock is on, और मैंने उसको क्रॉस कर दिया मतलब clock off है. Okay ना? So we have to take the first case as case 1 is when SR is equal to 0 0. So S is 0, R is 0. Okay, then what happened? Which gate we are using? NAND gate. So if you see NAND gate here, then whenever it has 0 at one input, तो यहाँ पे whatever input you are going to give on the second input, it will not affect on the output. Okay ना? तो जो whenever we are giving here 0 at one input, output always be 1. Okay, we know this in the control input of NAND gate we have studied. The next thing that is required here will be the truth table of NAND gate, because we are using NAND gate here. Okay, so if you have two input 0 0 0 1 1 0 1 1, okay, so what will be the result of NAND? We will see here. If it is 0 0, then output is 1. In this case also it is 1, it is also 1, this one will be 0. NAND means what? AND का इन्वर्ट ले लो. ठीक है ना? तो एंड फर्स्ट 3 केसेस में वैल्यू उसकी क्या होती है? 0 होती है, उसका नॉट ले लो तो 1 हो जाएगा, और लास्ट केस में 1 होता है तो उसका क्या हो जाएगा? नॉट 0 हो जाएगा. ठीक है ना? नाउ इफ यू सी इन द फर्स्ट केस, देन वी हैव 0 हियर, वी हैव 0 हियर, एंड इफ आवर क्लॉक इज ऑन मीन्स 1. क्लॉक की वैल्यू 1 है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. तो मान लो हमारा क्लॉक क्या है? 1 है. ठीक है ना? सो
At 0 1, if you see here, at 0 1, the output is always 1, so it will be 1. In the same way, it also be 1. Okay, na? Now this is 1, this is 1, and this is also 1. So one of the input of NAND gate is or at logic 1. अगर जब भी कभी ऐसा होता है तो इसको आउटपुट जनरेट करने के लिए ये दूसरा इनपुट चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1 है, क्योंकि अगर दूसरा इनपुट हमारा 0 होगा तो ये 1 0 होगा, देन इन दैट केस आउटपुट विल बी 1. इफ इट इज 1, द सेकेंड इनपुट इज 1, then in that case the output will be 0. Okay na? So there is a requirement of this second input. So suppose we have q equal to 0, let here. Okay na? So when q is equal to 0, then q bar will be 1. If you see here, so this is 0, that 0 will come here. So now it is 1 0. At 1 0 output is 1, so it will be 1. Similarly, this 1 is transferred here. Now at 1 1 output is 1 1, output is 0, so output will be 0. What it mean? It means that we have taken the previous output as 0 and now we will get 0. जो next output है वो भी हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. Okay na? Now if we take q is equal to 1, if we take q is equal to 1, then what happened in that case? Suppose it is 1, so it will be 0. Now okay, so if it is 1, then here we have 1, so at 1 1 output will be 0, so this 0 will be here, will go here. So at 1 0 output will be 1. What happened here? Whatever state we have previously, now we have that state also. Okay ना? यानी पहले 0 था, अब भी 0 है जब हमने 0 लिया. अब पहले 1 था और अब भी हमारा क्या है? 1 है. यानी 0 0 पे जब भी s और r की वैल्यू वी हैव 0 0, इन दैट केस द आउटपुट विल बी द प्रीवियस आउटपुट, दैट इज q. नाउ केस 1 is over. Now I am going to discuss about case 2. So case 2 means SR is equal to 0 1, so S will be 0, R will be 1. So what happened in this case? Let's form the circuit. Now if we see here, so we have S equal to 0 and R equal to 1. Okay na? So if our clock is 1, okay, then what happened? Clock is on. Clock is on means 1 we have taken. Now in case 2, the S is 0 and R is 1. Suppose the clock is on, so it will take 1 here. So it will be 1 0.
At 1 0 output is 1, so it will be 1. At 1 1 output will be 0. Okay, so output will be 0 here. So whenever the one of the input of NAND gate is at 0, the output will be 1, so this will be 1. Okay, in this case this 1 is go here, because when it is 1 then it will wait for the second input to come. और यहाँ पे क्या है, अगर NAND गेट का एक इनपुट 0 पे होता है तो ये दूसरा इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा. ओके, so that's why it is 1 1, output will be at 1 1 output will be 0. So in this case whatever we have previous output, this output will not depends on that. Okay na, it always comes what, 0. So that's why for 0 1 the value will come here 0. Okay na. Now our next case will be case 3. So in case 3 SR is equal to 1 0. It means what, S is 1, R is 0. So what happened? So in this case we have S equal to 1, R equal to 0. Let our clock is on, then it will be 1. So at 1 1 output will be 0, and at 1 0 output will be 1. Okay, so whenever this value is 0, one of the input of NAND gate is 0, then it will not wait for this second input. Second input आए ना आए, whatever the value of the second input, okay na, always output will be 1, we know that. Okay, so and this one will be transferred here, so it is 1 1. At 1 1 output will be 0. Okay na. So whatever the previous output we have, the next output or next state will not depends on that previous output. It always produce 1 as output here. Okay na. So in this case where SR is 1 0, output will be 1. Okay, now case 4 we have. In case 4 SR is equal to 1 1. Let's see what happened. If you see here, so S is 1, R is 1, and if our clock is on, then it is also 1. So at 1 1 the output will be 0, at 1 1 the output will be 0. Now whenever this output will be 0 here, जब भी एक इनपुट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 0 पे हो, आउटपुट हमेशा क्या आता है, 1, बिना इस सेकेंड इनपुट का वेट किए. सो इट विल बी, आउटपुट विल बी 1 हियर, आउटपुट विल बी 1 हियर आल्सो, बिकॉज one of the input of this NAND gate is 0 and one of the input of this NAND gate is also at 0. Okay na. So when one of the input of NAND gate is 0, then it will generate always output as 1. Similarly in this case also it will generate output as 1. Okay na. So what happened here, Q is equal to Q bar is equal to 1. So in this case we have Q is equal to Q bar is equal to 1. That is which state, invalid state, we know that. Okay, because under normal condition Q always be complement of Q bar. Okay, so this is the our functional table of the SR flip-flop. Okay, so at 0 0 we got that previous state value, at 0 1 we got 0, at 1 0 we got 1, at 1 1 we got output as 1, but it treated as this is our invalid state. Okay na. So that's why we will never apply this 1 1 on SR latch, on SR
flip-flop. Okay, because we are not getting output correctly. Okay na, because it will give q is equal to q bar is equal to 1, that will never be equal, both are complement of each other. Okay na, so we will not apply it. Now our next, this is the functional table. Our next step is characteristic table. I am going to decide if S, R and previous means input and previous output is given, then what is the value of the next output. So we have as a input SR Qn, and we have to decide the value of Qn plus 1. So now we have 3 input and 1 output. So we have 3 input. How many combinations will be there? We know that 8 combination. So it will be 0 1 0 1 0 1 0 1. Now we have 2 0 2 1 2 0 2 1. Now for this we have 4 0 and 4 1. Okay na, these are the 8 combination with 3 inputs. Okay, now we know that. Now if we see here in the function table of SR flip-flop, so when S and R is 0 0, output will be the previous output. Okay na, the next state will be the previous state. So here if you see, so both S and R are 0 0. In this case the next state will be the previous state. So previous state is 0, so next will be 0. Previous is 1, so next will be 1. Okay, now go for this one 0 1. For 0 1, if you see in the functional table, so at 0 1 we have 0. Okay na, it will not depends on the previous output. So at 0 1, whatever the value of previous output, this next output will not depends on that. It always give output as 0 0. Similarly if you go for this one, so it always generate output as 1 1. Okay na, now this is the input we will never apply on the circuit, because it is given, it will give you the invalid output. Okay na, so we will not apply such inputs on the circuit. Okay, so the input that is never apply on this circuit is known as don't care. So we will take it as don't care. Okay, now I want to find the function of Qn plus 1. So what will be the function for Qn plus 1? I want to derive the function. So we know that with the K-map, with the help of K-map, we have 3 variable K-map here, because we have 3 variable S, R and Qn. So this is our 3 variable K-map. Here we have S, here we have R Qn, so it will be R bar Qn bar, it will be R bar Qn, it is R Qn, this one will be R Qn bar. Now we have S bar here, S here, it will be 0 1 2 3 4 5 6 7. If you see here, then the decimal value of this will be 0, this will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this is 5, this is 6, this one is 7. Okay, so where we have 1, at 1 we have 1, so it is 1. At 4 we have 1, so 4 will be 1. Now 5 also we have 1, so 5 we have 1. And we have 6 7 as don't care, so this one is don't care. Now I am going to group them. So we have one quad here, if you see here, it is one quad,
and one pair. So write the function of both. So here we get s as a common from here, but nothing will be common from the column side. If you see here, so nothing is common from row side, but we have common r bar qn from the column side. So what will be the function qn plus 1? It will be r s plus r bar q1. Okay na? So this will be the function for characteristic table of qn plus 1. So this is the function of qn plus 1. Okay na? This function that is derived from the characteristic table is known as characteristic equation. It is known as characteristic equation. Okay. Now one more table we have to derive. Actually इन सारे टेबल का आगे यूज़ होगा, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हियर. ओके ना? तो कैसे उसको डेराइव करना है वी विल स्टडी. क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, वी विल स्टडी दैट. ओके ना? सो चाहे कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो, फंक्शन टेबल हो, एक्साइटेशन टेबल हो, ये सारे हमें यहाँ पढ़ने हैं. एंड वी विल यूज ऑल दिस टेबल्स इन लेटर स्टेज ऑफ दिस यूनिट. ओके ना? So our next concept is excitation table of SR flip-flop. So what will be the excitation table? Let us see. In excitation table we have present state and next state as a input, and we have to decide this output will come on which inputs. Okay na? So here we have output as input, output states as input, and the input will be our output. So let's see what happened. So if we have two variable, then how many combinations? 4 combinations: 0 0 0 1 1 0 1 1. Now if you see this excitation table will, this is excitation table, heading is excitation table. Okay na? So this excitation table we will get from here. Okay na? See here, if both are 0 0, qn and qn plus 1, let's see where we got 0 0. So in this case we got 0 0, qn and qn plus 1, and in this case also we got 0 0. Okay na? So we have to see corresponding to these two cases, corresponding to these two, this one and this one, what is the value of SR? So SR in this case we have 0 0, and in this case we have 0 1. So which one is fixed value? S is always 0, so put S as 0. And whenever we don't know what will be the value, whether it is 0 or 1, जब एक से ज़्यादा वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए पॉसिबल हो, then we will use don't care. So it will be, because if you see here the value of r is 0 in this case and the value of r is 1 in this case, so it will be either 0 or 1. So either 0 or 1 means what? Don't care we have. Okay na? Now this x represent what? The value of it will be either 0 or 1. Okay. Now go for 0 1. So where we have 0 1, so here this is the case of 0 1. Okay na? Anything else we have? Any other places we have 0 1? No. So only one case. So corresponding to this 0 1 we have input as 1 0. So what is the value of S and R? It is 1 0. So write here 1 0. So it will be 1. This one will be 0. Now we have 1 0. If you see 1 0, then you get here 1 0. In this case we have 1 0. So what is the corresponding value of this? 0 1. So this will be 0 1, because we don't have other combination of 1 0 here. Now next one is 1 1. So if you see 1 1, then you will get it
in two places. See here, this one is 1 1 and this one is 1 1. Okay na? So we have two cases for 1 1. So if you see the corresponding input value or corresponding SR value, so it will be 0 0 and this one will be 1 0. So which value is fixed? The value of R is fixed, that is 0. And if you see the value of S, then here we have 0 and here we have 1. So the value of S is possible either 0 or 1. So in that case we will use what? Cross. Okay na? So this is the table of, this is our excitation table of SR flip flop. Okay, so if you want to remember it, तो ये बहुत आसान है और रिमेंबर करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा. हाउ वी हैव डिराइव्ड वी नो दैट द प्रोसेस, लेकिन अगर ये रिमेंबर हो जाए तो बहुत अच्छा है, टाइम बच जाएगा क्वेश्चंस लगाने में. इफ़ यू रिमेंबर द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस, then you can write the excitation table of R without remembering. How? See here, in S we have 0 1 0 x. ओके ना? अब इसी को क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में R में लिख दो, तो वी विल गेट 0. देखो यहाँ पे 0 था तो 0, यहाँ 1 था तो 1, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ x है तो x. तो यहाँ पे क्या था? 0 1 0 x. इसी को अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 1 0 x. रिमेंबर फॉर s ओनली you can write for R by yourself. Okay ना? Easily. So now these are the three tables that are very important for attempting the question. Okay na? So our next flip flop is JK flip flop. So JK means जॉक किल्विसी. हम लोग बचपन में ना शक्तिमान देखते थे तो उसमें था सम्राट किल्विस, तो उसी का किल्विसी यहाँ पे आ गया है. ठीक है ना? एंड वी हैव फ्लिप फ्लॉप हियर. सो इट इज जॉक किल्विसी फ्लिप फ्लॉप. एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन SR फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ यू सी हियर, so for SR equal to 1 1 we will get invalid state. ओके ना? तो ये जो इनवैलिड स्टेट की प्रॉब्लम है, इट इज सॉल्व्ड इन JK फ्लिप फ्लॉप. ये कहाँ सॉल्व हुआ? JK फ्लिप फ्लॉप में. हाउ इट गेट सॉल्व्ड? लेट्स सी. एक्चुअली इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ invalid state of SR flip flop. ओके ना? सो जो SR flip flop में, SR मीन्स सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड स्टेट आता था वो प्रॉब्लम इसमें रिजॉल्व हो जाती है. मतलब यहाँ पे इनवैलिड स्टेट नहीं आता है इन द JK फ्लिप फ्लॉप. ओके ना? इफ़ यू वांट द सर्किट डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, देन देयर विल बी वन चेंज इन SR flip flop. So what will be the SR flip flop? Just first copy here. So we have this is our cross coupled. Okay. Cross coupled NAND gate. And now we have to connect these two with the clock. We have one input here, one input here. Now what happened in JK flip flop? It is our Q, this one is Q bar. In JK flip flop we have made one more connection. This is our J, this is our K, and we have taken one more connection here that will come from Q bar. Okay na? Similarly it also has one more connection and that is come from
Now this whole diagram is known as JK flip-flop. Okay na? So in JK flip-flop we have how many input? So we have J and K as input, and we have one clock here, and we go for the Q n plus 1. This is our functional table I am going to design here. So whenever clock is not applied, then whatever value you are giving here, the output will not change. Okay na? So it will be the previous output. If our clock is applied, means clock is on, then what happened? It has how many combinations? 4 combination, because 2 input variables are there. So with this 4 combination, what we will get, we will study here. So now we are going to consider case 1. So in case 1, the value of Jk is equal to 0 0, means J is 0 and K is also 0. Let's see what happened. Now when J is 0 and K is 0, so J is 0, K is 0, and suppose our clock is on. Okay now, so it will be 1. So whenever we got 0 here, it will be 1. We got 0 here, it is 1. It will not wait for this third input to come here. Okay na? Because if it is come also, then output will not going to be changed, because J has a 0. One of the input of this NAND gate is 0, then output will be 1, irrespective of what input applied on the other, what value applied on the other inputs. Okay. So now we have 1 1 here. So at 1 1 we have to require this second input. So let 1 here. So this one will come here. When we let here 1, then what is the value of this? 0. Now this is 1 here, this one will come here, so it will be 1 1. So at 1 1 output of this is our NAND gate. Okay na? So output of NAND gate will be 0, and this 0 will come here, so 1 0 means output is 1. So what happened here? Whatever previous output we are supposing here, that will come in the output. Okay ना? जो हमारा previous output था वही हमारा अब भी आ रहा है. Okay ना? If you suppose 0 here, then also you will get the same value. Okay na? So this will be Qn. You can check that when J and K value is 0 0. If it is 0 1, then in that case it is 0. If 1 0, then in that case it is 1. Okay na? You can check by yourself. Okay. Now I am going to check for the case 4. Okay na? So case 2 and case 3. Do yourself. Okay na? Do yourself. Now in case 4, Jk is equal to 1 1, because in this case we have problem in SR flip-flop. So J is 1, K is 1. Hello. Now in case 4, J equal to 1 is there, so it will be 1. This one is also 1, because J K value is 1 1. Now if clock is on, then it is 1. Okay na? So these two inputs are 1, so we have to require this third input also. So if you talk about this third input, then suppose the previous output is 1 for this, then it will be 0. So what happened? This 0 will be here, and this 1 will be goes here. Okay na? So since all are ones here, all are 1 here, so output will be 0, and here we have 1 1 0, so output will be 1. Okay na? If you see, then
1 is coming here. So if we have 0 here, then output will be 1 here. This 1 will come here. Now at 1 1, this will be 0. So what happened? Whatever value we have taken here, we have taken 1 here. So the next state is 0. If you take 0 here, you can check yourself, okay na? Then what happened? It will be 1. In that case, this 0 will be updated with 1 and this 1 will be 0. So what we are seeing here, okay na, you can do this operation. You just take q as a 0 and then see what happened there, okay na. So this 0 will be converted into 1 and this 1 will be changed into 0, okay na. What happened? It means that, so what it means that whatever value we are taking here, the complement of that variable is obtained at the output. So this will be the qn bar, because when we have taken a 1, output is 0, and when we take 0, output will be 1, okay na. So what we have here, next state is the complement of the previous state, okay ना. previous state मतलब next का previous है ना, तो इस वजह से we are talking about this is our previous state, okay ना. So if you see here, so this is called as hold state, this is called as reset state, this is called as set state, and this one is called as toggle state. Toggle state means it will convert 0 as 1 and 0 into 1 and 1 into 0. So this will be the function table of, this is our function table, okay. Now the next table is characteristic table. Our next table is characteristic table. So we know that in the characteristic table we have how many inputs? So it is j, k and qn as a input and qn plus 1 as a output. So we have 3 input variable. How many combinations? 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 combinations, okay. Now for this we have 00 11 00 11. For this we have 40 41, okay. Now if you see the function table, then from function table we will calculate our characteristic table. So if you see here, when the value of jk is 0 0, see here, when the value of j and k is 0 0, output will be the previous output. So what will be the output? So at 0 0, output will be the previous output. So whatever value is here on qn, that will be transferred to qn plus 1. So it will be 0, this one will be 1, okay na. For 0 1 in the table we have 0. If we have 0 1, then output will be 0. So 0 1 means this one, 0 1, output will be 0, okay na, because it will not depends on the previous output. If you see here, for these two combinations, okay na, 1 0, output is 1. Let's see that. Here you can see output is 1 at 1 0. So here we also get 1 1, okay. Now we know that when we talk about 1 1, then our output will be toggled, okay. So at 1 1 we have 0 output, so 0 ka bar you have 1 here. Now at 1 1 we have 1 here, so it will be 0, okay na. So this is our what? Characteristic table. Now I am going to write the characteristic equation. So if you want
characteristic equation, then we will use how many variable of K map? 3 variable K map, because we have 3 inputs. So it will be this one. This is our J K Q N. It will be K bar Q N bar, K bar Q N, K Q N, K Q N bar. This will be J bar and J. Now if you see here, so it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then what happened? So it is at 1 it is 1. So at 1 it is 1. At 4, 5 and 6 it is 1. 4, 5 and 6 it is 1. So if you perform grouping, then 2 groups will be obtained here. So this is our first group and this is our second group. So write the expression for this. It will be K bar Qn, and for this we have J from row side and Q1 bar from column side we have common. So it will be Qn plus 1 equal to K bar Qn plus J Qn bar. Okay na? Now our next table will be, this is called as characteristic equation. Equation of JK flip-flop. Now our next table is excitation table. If you want to construct the excitation table, then we know that we have Qn plus 1 as input and J and K as output. Now go for that. So for 2 input we have how many combinations? 4 combination. These are those combinations. So if you see the value of J and K, so at 0 0 Q1, let's see here in the, it is 0 0, this one is 0 0. So if you write corresponding JK value, so J is 0 in both the cases, but K is 0 and 1. Okay na? K is, in first case it is 0, in second case it is 1. So what we will write here, we will write 0 in place of J and K will be cross, because there are 2 values possible for this K. Now go for 0 1. Now we have 0 1. So at 0 1 is here and the second 0 1 is here. So if you see the corresponding value of J and K, then it will be 1 for J. So 1 is J and X for, this is the value na, 0 1. So it is 0, this one is 1. So K will be our X, because it has 2 possible values. Similarly, if you go for the 1 0, so at 1 0 we will get this one at 1 0 and this one. So if we get 1 0 this one, and so this one and last one. Okay na? So what happened here? It is X, because the value of J will be X, because X means don't care, because it has either 0 or 1 value, so it will be X, and the second one will be, for the value of K is 1 here and the value of K is 1 here, so it will be 1. Now our next combination for excitation table is 1 1. So go for 1 1. So if you see here, this one of blue color and this one, these two are 1 1. So write the corresponding value. It is 0 0 and it is 1 0, 1 0
and 0 0. So j key value we have two, values of j, that is 0 and 1, so it can be written as cross, and this will be written as 0, because in the both the cases where qn or qn plus 1 is 1 1, the value of k is 0. Okay, now if you want to remember, then remember the output of j and write in the reverse order in k. So it has 0 1 x x, write 0 1 x x. Okay na. So this is our jk flip flop. Our next topic is disadvantage of jk flip flop. Okay na. So what are the disadvantages of jk flip flop? We have race around condition. Race around condition in jk flip flop. What is a race around condition? Actually, suppose we have jk flip flop here. I have a jk flip flop jk. Here we have one clock. So j is 1, k is 1. This is which mode? Toggle mode. Okay na. This is our q. This is q bar. Suppose this is the signal for the clock. Okay na, this is the signal for the clock. So this time is known as t clock, time period of the clock, and this is known as this much. It is called as tpw. tpw means time for, it is pulse width. Okay ना, clock pulse width means इतने टाइम में हमारा फ्रॉम दिस टू दिस, इतने टाइम में जो हमारा क्लॉक है वो एक्टिवेटिंग मोड में है. ठीक है ना. एंड सपोज वी हैव TPD also. TPD means it is a propagation delay for JK flip flop. प्रोपोगेशन डिले मतलब कि आपको यहाँ पे आउटपुट को जनरेट करने में कितना डिले लग रहा है, दैट विल बी TPD. ओके ना. सो इस फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट जनरेट करने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज आवर TPD. ओके. नाउ TPW इज द क्लॉक पल्स विड्थ. ओके. एंड T clock is the time period of clock. Okay na. Now if you see here, so it will, the input is applied is 1 1. So at 1 1 we know that it will perform toggling. Toggling means if previous output is 0, then the next output will be 1. Okay na. If previous output is 1, then the next output will be 0. तो ये माना जाता है कि जो हमारा ये सिग्नल एक्टिवेट है इस ड्यूरेशन में. ओके ना. इस ड्यूरेशन में, तो इस पूरे ड्यूरेशन में टगलिंग ओनली 1 बार अकर होनी चाहिए. कितनी बार अकर होनी चाहिए? ओनली 1 बार. ठीक है ना. आइडियली. लेकिन होता क्या है, रेस अराउंड कंडीशन में होता क्या है कि जो ये एक्टिवेटिंग पल्स है हमारा, ठीक है ना, ये वाली एक्टिवेटिंग जो पल्स है, इसमें टगलिंग कई बार अकर हो जाती है. ठीक है ना. यानी कई बार जो यहाँ पे आउटपुट होता है प्रीवियस, वो क्या होता है, कई बार वो कम्प्लीमेंट हो जाता है. जैसे 0 होगा, फिर 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 1 हो जाएगा. ठीक है ना. ऐसा कब होता है, इसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन. ओके ना. तो ऐसा कब होता है वो देख लेते हैं. सो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली JK फ्लिप फ्लॉप must toggle only once. Okay na. But output of JK flip toggle
more than one time, more than one time, ओके ना। कैसे टगल करता है मोर देन वन टाइम, वी विल सी हियर। तो when we toggle more than one time, suppose we know that the propagation delay for JK flip flop is TPD. Suppose if JK is 1 and TPD, propagation delay of this JK flip flop is less than क्लॉक पल्स विड्थ, ओके ना। तो क्या होगा, सपोज इतना है टाइम आपका टीपीडी का। सो वी सी दैट जो टीपीडी है, जो प्रोपोगेशन डिले है जेके फ्लिप फ्लॉप का, दैट इज लेस देन द पल्स क्लॉक पल्स विड्थ, ओके ना। तो वी नो दैट कि फ्रॉम हियर टू हियर आवर क्लॉक इज इन एक्टिव मोड, ओके ना। और हमारा यहाँ पे इनपुट क्या है, 1 है। तो व्हाट हैपेंड हियर, इस ड्यूरेशन में जब यहाँ पे आउटपुट मान लो प्रीवियस वाला 0 था, देन इन दिस पीरियड इट विल बी 1, ओके। नाउ व्हेन दिस पीरियड इज ओवर फ्रॉम हियर, so it will see again the clock is activating mode, okay ना, because till now from this point क्लॉक हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग मोड में है। तो ये यहाँ पे देखेगा कि क्लॉक अभी भी क्या है, एक्टिवेटिंग मोड में है। और यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई है वो 1 है, तो ये फिर इसको क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, ओके ना। सपोज नेक्स्ट टीपीडी तक फिर यहाँ तक टॉगल हो गया। अगेन यहाँ पे जब ये रीच होगा तो अगेन इट सी दैट आवर क्लॉक पल्स इज इन एक्टिवेटिंग मोड, क्लॉक अगेन एक्टिवेटिंग मोड में इसको देखेगा। अगेन यहाँ पे 1 ऑलरेडी हमने अप्लाई किया ही है, तो तुरंत ये इसको की भी क्या कर देगा, टगल कर देगा। बल्कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इस पूरे क्लॉक पल्स के दौरान, ओके ना, सिर्फ हाउ मेनी टाइम्स इट विल टगल, ओनली वंस टाइम्स, ओके ना। बट इट इज टगल मोर देन 1 टाइम, दिस इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन, ओके ना। तो एराइज कब होता है रेस अराउंड कंडीशन, आई थिंक समझ में आ गया होगा रेस अराउंड कंडीशन क्या होता। सो रेस अराउंड कंडीशन arises when the first thing is j is equal to k is equal to 1, and second thing is the propagation delay of jk flip flop will be less than clock pulse width, okay ना। क्लॉक पल्स विड्थ से क्या हो, लेस देन हो। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो कुल मिला के इफ़ यू प्लॉट द आउटपुट फंक्शन, देन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इस पीरियड में मान लो ऐसा है, इस पीरियड में 1 टाइम यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फ्रॉम दिस होल ड्यूरेशन 1 टाइम आउटपुट को 1 होना चाहिए था। मान लो पहले 0 था, अगर प्रीवियस स्टेट का जो प्रीवियस स्टेट हमारा अगर 0 था, तो ये इस पीरियड में 1 टाइम क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, फ्रॉम हियर टू हियर, ओके ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कितनी बार, मोर देन 1 टाइम ये क्या करता है, 1 से 0, 0 से 1 होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रोपोगेशन डिले था इसका जेके फ्लिप फ्लॉप का, इट विल बी लेस देन द क्लॉक पल्स विड्थ, ओके ना। सो when these two conditions will be there, then race around condition arises, okay ना। तो इसी पीरियड, इसी को जो हमारा 1 टाइम होना चाहिए था टॉगल, वो मोर देन 1 टाइम हुआ, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन, ओके ना। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ऑफ रेस अराउंड कंडीशन,
सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि द प्रोपोगेशन डिले ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लॉक पल्स विड्थ, ओके ना? क्योंकि अगर ऐसा होगा, सपोज हियर आई एम गोइंग टू प्लॉट, तो this is our T clock and this is our TPW, okay ना? Suppose our propagation delay is greater than this, मान लो इतना हो गया, ठीक है ना? TPD, सो इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना, इस ड्यूरेशन में ये क्या करेगा? वन टाइम सिर्फ जनरेट करेगा, क्या? आउटपुट वन टाइम जनरेट करेगा, बिकॉज आउटपुट को जनरेट करने में कितना टाइम लग रहा है? टीपीडी टाइम लग रहा है। तो जब ये क्लॉक एक्टिवेट होगा देन इट विल जनरेट द आउटपुट, यानी आउटपुट को एक बार टॉगल कर देगा। जैसे ही एक बार टॉगल करेगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेगा कि क्लॉक हम उसका क्या हो गया, इट विल नाउ इन डीएक्टिवेटिंग मोड, क्लॉक हमारा डीएक्टिवेट हो गया। तो ये सर्किट हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इट विल नॉट वर्क, ठीक है। और टीपीडी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किससे लेस होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम पीरियड ना, तो टी क्लॉक से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर व्हाट? आवर रेस अराउंड कंडीशन जनरेट कब होगी? व्हेन this is our condition for race around condition. It will generate when j equal to k is equal to 1 and with this propagation delay of jk flip flop will be less than clock pulse width, okay ना? What will be the solution? आप क्या करो, clock pulse width जो है वो ज़्यादा था जब, किससे? आवर प्रोपोगेशन डिले से, देन ओनली द फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोर देन वंस इन दैट पीरियड, ओके ना? लेकिन इफ वी इंक्रीज द प्रोपोगेशन डिले ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके ना, देन व्हाट हैपेंड? इट विल टॉगल ओनली वंस इन दैट पीरियड। बट प्रोपोगेशन डिले की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? इट विल लेसर देन द टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। तो वो तो होगा ही, टाइम पीरियड मतलब पूरा एक पूरा लूप चलेगा, ठीक है ना, फ्रॉम हियर टू हियर वन फुल साइकिल चलेगी, देन इट इज़ कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ दैट क्लॉक, ओके ना? सो इफ दिस कंडीशन विल होल्ड देन वी से दैट रेस अराउंड कंडीशन नेवर अकर, ओके ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, बट इसमें कुछ हमने क्या किया, कुछ वी हैव चेंज्ड सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ टगलिंग विल नॉट अकर इन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके ना? एक्चुअली इन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप वी हैव कनेक्टेड टू जेके फ्लिप फ्लॉप इन सच अ वे दैट टगलिंग विल नेवर अकर, we will see here, okay na? So it is jk, this is q bar, so this is our jk flip flop, this is our clock, one more jk flip flop is also here, jk q bar, okay? Now the first flip flop, this one is known as master flip flop and this one is known as slave flip flop, okay na? So slave will be connected with the NOT gate of the clock, okay, and this output is going to connected with the J and Q bar will going to connected with the K, okay? Now if you see here, at one time only one flip flop will be active, okay na? Because if suppose this will active,
then at that time not get is there na, so not is applied here, so at that time this is in deactivating mode. If it is the master flip flop is in deactivating mode, then at that time the slave will be in activating mode. This whole flip flop we will treat it as single flip flop. ओके ना, को हम कैसा ट्रीट करेंगे, सिंगल फ्लिप फ्लॉप जैसा. ओके और ये हमारा जो आउटपुट होगा, द फाइनल आउटपुट इज फ्रॉम स्लेव हियर. ओके ना, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही मास्टर, वी विल नेम हियर मास्टर, दिस विल बी आवर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. सो ऐसा नहीं कि जैसे ही यहाँ से आउटपुट यहाँ जनरेट हुआ दैट विल बी द फाइनल आउटपुट. नो, द फाइनल आउटपुट विल बी फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके ना, फ्रॉम हियर वी विल गेट द फाइनल आउटपुट. ये तो हमारा इन बिटवीन का जो प्रोसेस है वो है. ओके ना, तो हाउ इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड कंडीशन. इफ यू सी हियर, this will be our clock, we know that. Okay, so this is our TPW. Okay, if suppose the propagation delay is less than the clock pulse width, in this case then we know that for this activating process, when our clock is in activating mode, the master flip flop will be in activating mode. तो यहाँ पे आप 1 जब दोगे तो अगर यहाँ पे मान लो प्रीवियस 0 आउटपुट था तो इसको क्या कर देगा, ये 1 कर देगा. ठीक है ना, क्या कर देगा, इट विल डू इट एज 1. ओके, लेकिन ये हमारा फाइनल आउटपुट नहीं है. फाइनल आउटपुट हमें कब मिलेगा, फाइनल आउटपुट वी विल गेट व्हेन दिस विल बी इन एक्टिव मोड. क्योंकि अभी तो क्या है, अभी सिर्फ मास्टर एक्टिव मोड में है, लेकिन ये हमारा एक्टिव मोड में नहीं है. तो एक्टिव मोड में ये कब आएगा, जब क्लॉक पल्स हमारी क्या होगी, 1 की जगह 0 होगी. तो ये हमारा आउटपुट ये जनरेट तब तक नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है वो इस पे नहीं आता, क्योंकि इस वाले ड्यूरेशन में स्लेव एक्टिव है, नॉट गेट से कनेक्ट है ना. तो अगर मान लो 1 पे अगर ये क्लॉक वर्क कर रहा है, द फर्स्ट क्लॉक इज़ वर्किंग एट 1, तो उस केस में तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी. सपोज दिस इज़ 1, दिस, तो उस केस में ये 0 हो जाएगी. 0 मीन्स डीएक्टिव मोड. तो ये आउटपुट जनरेट तुरंत करेगा नहीं. ये कब तक वेट करेगा, जब तक कि ये पूरा का पूरा पीरियड यहाँ फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये स्लेव हमारा एक्टिव मोड में नहीं आएगा. और जब ये एक्टिव मोड में आएगा देन वो इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट. ओके ना, अब यही प्रॉब्लम होती थी ना कि यहाँ पे TPW जो हमारा पूरा टाइम होता था उसमें ये कई बार प्रोपोगेट कर देता था आउटपुट. लेकिन अब जो वो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, क्योंकि इन दिस केस फॉर दिस ओनली मास्टर इज एक्टिव. सो मास्टर्स तो आउटपुट जनरेट कर देगा, बट इट विल नॉट गोइंग टू बी आवर फाइनल आउटपुट. आवर फाइनल आउटपुट विल बी फ्रॉम दिस स्लेव फ्लिप फ्लॉप. ओके ना, और ये क्या होगा तब, अब यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा इट विल वेट कब तक, जब तक कि ये हमारा स्लेव जो फ्लिप फ्लॉप है जब तक ये एक्टिव नहीं होता. और ये एक्टिव कब होगा, यहाँ पे. ठीक है ना, यानी पल्स विड्थ का जो टाइम ड्यूरेशन था वो इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. ठीक है ना, तो इस कंडीशन में द रेस अराउंड कंडीशन विल नेवर अकर, है कि नहीं. क्योंकि फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा इट विल कम फ्रॉम द स्लेव, और स्लेव हमारा एक्टिवेट है इस ड्यूरेशन में. इस ड्यूरेशन में हमारा स्लेव क्या है, एक्टिवेटेड है. ओके ना, तो ये तब तक तो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा जब तक कि ये वैल्यू क्रॉस नहीं होती. जैसे ही ये वैल्यू, ये सिग्नल जैसे ही क्रॉस होता है, जैसे ही उसका
रिवर्स सिग्नल मिलता है, देन एट दैट टाइम ये स्लैब हमारा एक्टिव होगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। ओके ना। तो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम विद द हेल्प ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। आई थिंक so our point is, the first point on master slave zk flip flop is the overall circuit acts as a single flip flop। भले ही हमने दो उसमें ऐड कर दिए हैं, बट ये पूरा का पूरा जो फ्लिप फ्लॉप होगा इट विल ट्रीटेड एज द सिंगल फ्लिप फ्लॉप। So if it is a single flip flop, then it will store how many bits? 1 bit, because we know that a single flip flop will store only 1 bit. Okay na? So when our clock is from 0 to 1, then only master flip flop will be in activating mode। okay na? And when our clock is from 1 to 0, then only slave flip flop will be in activating mode। it means that at any instant only one flip flop is in activating mode। अब जो भी डेटा होगा that will be entered from the master flip flop। so the external data will be entered from master flip flop। okay na? when it is triggered or it is activated, when it is activated, the output will be obtained only when slave is activated। okay na? so the problem of race around condition is not present in master slave zk flip flop। okay, now our next concept is D flip flop। our next concept is D flip flop। D means data flip flop। D flip flop में होता क्या है एक्चुअली? सपोज दिस इज आवर SR flip flop। ओके ना? तो SR फ्लिप फ्लॉप में, D फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है दैट्स इज D। उसी को हम क्या करते हैं, S में डायरेक्ट दे देते हैं और R में वी विल डू इट बाई प्लेसिंग नॉट गेट इन बिटवीन। ओके ना? तो D यहाँ आ जाएगा, D बार यहाँ आ जाएगा। ओके ना? तो हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव गिवन? ओनली वन इनपुट। ओके ना? एक ही इनपुट दे रहे हैं ना, लेकिन वो इनपुट क्या हो रहा है यहाँ पे अगर D की वैल्यू 0 आ रही है देन R में उसकी वैल्यू 1 आ रही है, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड इन बिटवीन विद द नॉट गेट। ओके ना? सो दिस इज आवर क्लॉक। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप यू हैव वन JK फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप के
both inputs को you will connect with the D input, okay na, with J will be directly connected and K will be connected with the help of one NOT gate. Okay, so we have how many inputs? Only one input, okay na. So if you are going to form the diagram for D flip-flop, then the block diagram will be, here we have D, here we have Q, here we have Q bar, okay na? Practically we are giving only one input here, but it will be work like this, okay na, like this. Now I am going to write the function table for D flip-flop. Function table for D flip-flop. If you see the function for table for D flip-flop, then we have clock D and Q and plus 1, you know, because we have only one input, that is D only. So whenever our clock is not active, then whatever value you are giving here, the output will be the previous one. And when our clock is active, then how many combination we have? Only two combination, because only one variable is there. So in these two condition, in these two combination, our clock is in active mode. So if D is 0, see here in the because we know the table of S and R and J and K. If it is 0, then this one will be 1. So if you see SR flip-flop or JK flip-flop, if you see here, okay, in the JK flip-flop, when one input is 0 and the next is 1, then output will be 0, okay na. And when the one input is 1 at 1 and output will be, when one input is 1 and the next input is 0, then output will be 1. यानी जब भी 0 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, 1 0 पे आउटपुट 1 होगा. वी नो दैट. वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. व्हेन वी गिव 0 here, then it will be 1. Okay, so which combination is it? Is 0 1. So 0 1 में JK फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट क्या आता था? It is 0. So output will be 0. ठीक. Similarly, if D is 1, suppose it is 1, then in this case it will be 0. So at 1 0, output of JK flip flop will be 1. So this will be the function table for D flip flop. Or you can say here कि जो D फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है. आउटपुट इनपुट को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? वट एवर इनपुट वी आर गिविंग हियर दैट विल कम ऑन टू द आउटपुट. सी हियर. ओके, सो आउटपुट follows input in D flip flop. Okay, now our next job is for this is our function table over. Now next table will be characteristic table. Next our table is characteristic table. So in characteristic table we have D Qn and Qn plus 1, because we have only one input D and that and one more is our previous state. Okay, so with two input how many combinations? 0 0 0 1 1 0 1 1. So we know that in D flip flop output always follows input. तो input हमारा क्या था? This one D. तो चाहे यहाँ पे प्रीवियस स्टेट की वैल्यू कुछ भी हो, वट एवर द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस स्टेट, इट विल नॉट अफेक्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेट. ओके ना. सो ऑलवेज द
value for this will be the same as the input, so it will be 0 0 1 1. Okay, so if you want what, the characteristic equation, then you can directly put it here if you want. Okay na, apply linear algebra. So this is 1, this is 1, so it will be qn plus 1 is equal to, for this we can write as dqn bar, and for this it is dqn. What will be the value? dqn bar plus dqn, take common d, then you get qn bar plus qn, और इसकी वैल्यू वी हैव स्टडीड इन बूलियन अलजेब्रा, इट इज़ 1. तो क्यू एन प्लस 1 क्या हो जाता है? इट विल बी डी. यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? इनपुट को फॉलो करता है. ओके ना, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. नाउ our next table is excitation table, so go for that. Excitation table. In excitation table we have qn plus 1 as input, and we have to decide the value of d. So with two input, how many combinations? Again we have 4 combinations. Okay, एंड वी नो दैट, यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? आउटपुट फॉलो करता था किसको? इनपुट को. तो जो भी डी की वैल्यू होती है दैट विल बी कॉपीड इन क्यू एन प्लस 1. तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो क्यू एन प्लस 1 की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इन डी. ओके, so this is the excitation table for D flip flop. Now our next flip flop is T flip flop. T flip flop. T flip flop means toggle. T means toggle flip flop. ओके ना, इसमें क्या करते हैं? इसमें वी आर टेकिंग ए जेके फ्लिप फ्लॉप. वी हैव जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके ना, सो इन जेके फ्लिप फ्लॉप हम क्या करते हैं? इन दोनों इनपुट्स को कनेक्ट करके, ओके ना, डायरेक्ट कनेक्शन होता है दोनों जगह, एंड टी से कनेक्ट कर देते हैं. ओके, तो दिस इज आवर टी फ्लिप फ्लॉप. अगर आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस. ओनली वन इनपुट इज हियर एंड क्यू बार इज हियर. ओके ना, एंड हियर वी हैव क्लॉक. दिस विल बी द जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर टी फ्लिप फ्लॉप. लेकिन इंटरनली ये क्लॉक कॉल ऐसे होता है, ठीक है ना. सो इफ यू गो फॉर दी function table, then you can easily write here function table for T flip flop. function table में क्या हो जाएगा? T flip flop में we have clock T and Qn plus 1. So when our clock is not in activating mode, then whatever value you are giving, the output will be the previous one. When our clock is in activating mode, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ़ वी गिव 0 हियर, तो बोथ J और K में क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा. एंड वी हैव सीन दैट जब J और K की वैल्यू वी हैव 0 0, सी हियर, व्हेन J and K is 0 0, then it will generate the previous output. If both are 1 1, then it will toggle the previous output. Okay, so come to the पॉइंट, इट विल बी आइदर 0 और 1. सो जब भी यहाँ पे 0 होता है इट विल जनरेट द प्रीवियस आउटपुट, एंड व्हेन इट इज़ 1 देन इट विल जनरेट द टगल ऑफ दैट, यानी इन्वर्टेड आउटपुट, इट इन्वर्टेड प्रीवियस आउटपुट. ओके ना, सो दिस इज द फंक्शन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप. नाउ नेक्स्ट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल. What will be the characteristic table? So we have T
qn plus 1 with two combinations. Sorry, with two input we have how many combinations? 4 combinations. What will be the value for qn plus 1? So when t is 0, see here, when t is 0, output will be qn. So it is 0, so output will be q1. So this will be the compute here. Okay, when it is 1, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आउटपुट होता है उसका कंप्लीमेंट यहाँ आता है. सो इट विल बी 1, दिस वन विल बी 0. So this is the characteristic table of T flip-flop. If you go for the characteristic equation, so what it will be? It will be qn plus 1 is equal to t bar qn. For this we get t bar qn by using minterm. For this we get t qn bar. So t qn bar, which gate it is? You see here it is our XOR gate. Okay, na? This is our function. Now our next job is excitation table. In excitation table we know that the input will be qn plus 1 and output will be t. तो यहाँ पे with two input how many combinations? 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, now we know that here in the characteristic table, if the combination is 0 0, the previous and next output combination will be 0 0, the value of t is 0. Okay, na? So at 0 0 it will be 0, and at 0 1 0 1 is this one, output will be 1, so it will be 1. At 1 0 1 0 means this one, output will be 1. Again for 1 1 1 1 is this one we have here. So at 1 1 output will be 0. So this is the excitation table for T flip-flop. Okay, na? So we have studied all the three tables and characteristic equation of all the flip-flop, whether it is SR flip-flop, JK flip-flop, then D flip-flop and T flip-flop. Okay, na? So I am going to rest my lecture here. In the next lecture we will study about the conversion of one flip-flop into other. Okay, let's crack the gate.